Okay, let me continue with my story. I will directly continue from from the part where I end in first video. So I will directly continue from that itself. I ended here when coordinator will try to sort out problems on their own. Now, if they can sort out the problem is okay. Otherwise, these people will definitely go to upper management, that is either madam or trustee sir. Yes or no? So then the whole matter will be with this management, and they will finally sort out the problem, or they will finally guide to coordinators will finally guide to teachers will finally guide to everyone. In the same way, MLAs will discuss issues with CM, that is the state government, and then state government will give relative reasons or relative solutions related to matter. Then MLAs will declare that solution for to talukas, and talukas will further डिस्कस और शेयर दैट सॉल्यूशन विद विलेजेस. तो इस तरह से पूरा वर्क चलता ही रहता है. ओके, सो द सेम थिंग हेयर ऑल्सो. कोऑर्डिनेटर्स के बाद में तो मेन गवर्नमेंट ही काम करेगी, दैट इज़ अवर मैम एंड सर, राइट. तो दिस इज़ टाइप ऑफ सिविक्स. ये सिविक्स का टाइप है. अंडरस्टूड. तो हम अपनी बुक्स में भी सिविक्स के बारे में कुछ यही सब पढ़ने वाले हैं कि हाउ पीपल आर लिविंग टुगेदर विद डिफरेंट कास्ट एंड कलर्स एंड creed and different we can tell income source, अमीर गरीब, हर एक तरह के बॉयज़ गर्ल्स. लाइक हमारी क्लास में किस तरह से सब अलग अलग फैमिलीज से होते हैं, लेकिन वो सब एक ही क्लास में बैठते हैं. उसी तरह से इंडिया में जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी कोई एक कम्युनिटी नहीं होती. अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ होती है. अमीर भी बहुत होते हैं, गरीब भी बहुत होते हैं, मिडिल क्लास पीपल भी बहुत होते हैं. सो व्हेन ऑल दीज पीपल लिव टुगेदर इन अ वे ऑफ पीसफुल मैनर, that is all because they are working according to instructions given by government and following rules and regulations. So all these things comes to civics. ये civics है. Okay, so in this 2 videos I haven't started with any lesson, but I was to give you introduction about civics, कि civics किस तरह से काम करेगा, गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, that all. Okay, so from these 2 videos please understand what I gave you example of our school management working and our state and central government working. Okay, all the lessons of civics are very easy. Don't worry at all. Don't just think it is a new chapter and all. It's a very good and very easy chapter, I must say. You people will easily understand it. Okay, so I will complete my introduction part of civics here only. Please go through with both the videos together, and from third my video onwards we will start our explanation of understanding diversity. Okay everyone, stay at home, stay safe and take care. Bye bye.